Very good evening, everyone. Is it audible to all? Pranam sir. Yes. Namaskar, pranam to everyone. Thank you. It's audible. Okay, sir. Thank you so much. So, warm welcome and very good evening to our honorable chief guests, distinguished guests, guest of honor, governing committee members of Maharshi Charak Ayurveda Research and Development Scheme, our esteemed faculty members, a resource person of this one-month certificate program, and all organizing committee members of this program. I am Amit Tiwari, head of the Department of Information Technology and in charge of RD Cell at Institute of Applied Statistics. To mark this auspicious beginning of today's inaugural ceremony, let us invoke the divine blessing of Lord Dhanvantari, the eternal source of health, healing, and wisdom in Ayurveda. Let us join our hands and hearts in reverence as we begin this session with the divine chanting of Dhanvantari Vandana. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुग्भयमृत्युनाशम् धातारमिशं विविधौषधीनाम् चं व्योमवातावनिवारिवह्निम् पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजम् सन्तापसम्पातजराज्वरान्तकम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलमुदकान्तिकान्तम् शान्तं हरैर्द्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् So thank you all. It is with immense pleasure and pride that we gather here today for the inauguration of this one-month online certificate program on systematic review and meta-analysis for AYUSH researchers. This online certificate program is jointly initiated by the Joint R&D Center of All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and Institute of Applied Statistics, Kanpur, in collaboration with the CCRAS, New Delhi. To begin this auspicious occasion, I would like to invite Dr. Shubham Pandey sir, who currently serves as the Project Director of R&D Scheme at the Institute of Applied Statistics, as the National Coordinator of Dr. Padam Singh Research and Development Scheme in collaboration with ICMR and the Institute of Applied Statistics. He is deeply committed to advancing medical research and statistical analysis. He has also made significant contribution to public health as senior statistician in the National Retinoblastoma Registry Program at the National Institute of Pathology, ICMR, New Delhi. Now I would like to invite Dr. Shubham Pandey sir to extend his warm welcome to our esteemed guests and deliver the welcome address. Please, sir, welcome. गुड इवनिंग अमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Please. Very good evening to all, honorable chief guest, distinguished guest, guest of honor, esteemed faculty member, and dear participant. A very warm welcome to all of you. It gives me immense pleasure and pride to address the gathering of the online inaugural ceremony of 1 month certificate program of systematic review and meta-analysis for AYUSH researcher. Jointly organized by Joint R&D Center, All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and Institute of Applied Statistics, Kanpur, in collaboration with Central Council of Ayurveda Research, CCRAS, New Delhi. We are deeply honored to have with the Professor Ved Kartar Singh Dhiman sir, Vice Chancellor, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra, as our chief guest, and Professor R.N. Acharya, Director General, CCRAS, New Delhi, as our distinguished guest. The visionary leadership and dedication have been the instrumental
in advancing Ayurveda and integrative medicine within the AYUSH framework. We are equally privileged to have among as a guest of honor and the convener of this program, Professor Ved Pradeep Kumar Prajapati sir, Director, All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and Dr. G.S. Tomar sir, Director, Ayush Research, and the Chairperson, Maharshi Charak, Ayurveda R&D Scheme. Institute of Applied Statistics, Kanpur has always been committed to empowering researcher and professional through capacity building program in clinical and statistical research by developing need-based training module. In consultation with the expert and academicians, we ensure that our initiative stay aligned with the dynamic need of the research community. The systematic review and meta-analysis for AYUSH researcher program have been especially designed for research scholar, faculty member, and medical professionals who wish to strengthen their understanding for systematic review and meta-analysis and develop the evidence-based medicine program for AYUSH research. Dear participant, I encourage each one of you to make the most of this opportunity, engage actively with our expert, participate in the live session, take part in daily quiz, and share your feedback after every session. Use this opportunity to sharpen your research skill, academic perspective, and contribute meaningfully of the growth of Ayurveda and healthcare innovation. Thank you all once again, and I wish to inspiring and enriching learning experience throughout the program. Thank you very much. Thank you, Mr. Thank you so much to extend a warm welcome to our esteemed guests and deliver the welcome address. Now, moving forwards, we are honored to have with us Dr. Seema Dwivedi ma'am, the National Coordinator of Maharshi Charak Ayurveda Research and Development Scheme, currently serving as a Senior Professor in the Ops and Gynae Department of GSV Medical College, Kanpur, and a distinguished member of the National Medical Wing. She also serves as the convener of the Indian Thinkers Society, and her passion for student health care science through enroll as a National Coordinator of Pandit Madan Mohan Malvi Bal Saksham Yojana. We are privileged to have ma'am with us today in this inaugural ceremony, and now I'd like to invite ma'am to share an introduction to Maharshi Charak Ayurveda Research and Development Scheme with our participants and all faculty members who are presented in this program. Please, ma'am, welcome, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Welcome, ma'am. A very good evening to all. My camera is not so clear. I think something has gone wrong in that. But anyway, Honorable Chief Guest, distinguished guests, guests of honor, and esteemed faculty members and dear participants. It's a great privilege and honor to be present at the inaugural ceremony of the 1-month certificate program on systematic review and meta-analysis for AYUSH researchers. I extend my sincere appreciation to the joint R&D Center of AIIA New Delhi and Institute of Applied Statistics Kanpur to initiate and organize this meaningful and skill-oriented program. Over the past few years, we have been dedicated to fostering a culture of research excellence and innovation in the field of AYUSH. Under the esteemed Maharshi Charak R&D scheme, we have achieved remarkable milestones. More than 7 joint state and district training centers, research and development centers have been established to date, serving as vibrant hubs for training and collaboration, and few are under approval. Over 5,000 Ayurveda researchers, scholars, and faculty members have been trained in partnership with esteemed institutions such as AIIA New Delhi, Faculty of Ayurveda IMS BHU, NIA Jaipur, ITRA Jamnagar, DY Patil University Mumbai,
and Himalaya University, Dehradun, and many others. Recognizing the importance of digital education, several online certificate programs have also been successfully conducted, expanding access to research training across India. In addition, our research consultation services have supported nearly 10,000 individual researchers, medical students, and faculty members, offering valuable guidance in data analysis, study design, research writing, and publication support. The Institute of Applied Statistics continues to extend these services in collaboration with both public and private institutions. To all participants, I encourage you to take full advantage of this opportunity, strengthen your expertise in systematic review and meta-analysis, enhance your academic and professional qualification capabilities, and become torchbearers of evidence-based Ayurvedic research. In conclusion, I extend my heartfelt gratitude to all organizers, collaborators, and participants who have made this program possible. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for enlightening about the scheme. And now we are honored to have with us organizing secretary of this program and the nodal officer of this joint R&D Center of All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and Institute of Applied Statistics, Kanpur, Dr. Salini Rai, ma'am, who is currently serving as associate professor in the Department of Rog Nidan and Vikriti Vigyan at the AIIA, New Delhi. Ma'am plays a pivotal role in strengthening diagnostic integration with Ayurveda through her leadership in clinical pathology, radiology, and laboratory services. With a remarkable record of academic mentorship, impactful research publication, and insightful national and international contributions, ma'am stands a distinguished expert in her field. And since last previous 2 months, ma'am is coordinating this program to initiate with some experts and all things. So we are sincerely invite you, ma'am, to enlighten us on this benefit and scope of this systematic review and meta-analysis for AYUSH researchers, and request you to share your valuable insights on how these methodologies can enhance evidence-based practices. Please, ma'am, welcome. Thank you so much, Amitji, for this opportunity. Respected Chief Guest, Professor Ved Kartar Singh Dhiman, sir, Honorable Chairperson, Professor Dr. G.S. Tomar, sir, our distinguished guest, Professor R.A. Charak, sir, our convener, respected Professor Vaidyapree K. Prajapati, sir, and Seema Devedi, ma'am, all the other organizers, clinicians, PG, PhD scholars, and all the dear participants. As we all know that systematic review and meta-analysis are considered as the highest level of evidence in any field. We as Ayurveda clinician, academician and researcher are doing our every best possible thing to produce evidence in this today's scenario when it is the need. But with the help of knowledge of the systematic review and meta-analysis, we will be able to synthesize all the discussed evidence in the form of a particular format which is highly respectable in the scientific community. This program will help us by enriching the knowledge, and this as a clinician, academician or a researcher will be able to upgrade us, because when we know this kind of tools and technologies, we can use it in 2 ways. First, whenever we are planning to do some systematic review and meta-analysis, we can submit it in the form of a protocol also. So the first benefit is that you can develop a protocol with the help of these tools and you can submit it, register it on Prospero. And second, after publishing that protocol and you are getting registered on Prospero, then you can further synthesize that evidence and go for a full length research paper. So with these kind of tools and technologies, when we are advancing ourselves, we will be able to turn ourselves from consumer of data to the producer of data, which will help us in the scientific establishment of Ayurveda. So we, in whatever capacity we have joined as either a teacher or as a scholar or in the form of a clinician or researcher, this is an opportunity for us to have a first-hand knowledge. So we request all our participants to please engage in this kind of program and do as much hands-on as possible, and do not hesitate in asking questions, because these questions will help us to get the right way. So without taking much time, I am thankful to my co-organizers and all the respected chief guests, sir, and chairperson, sir, and all the dignitaries for taking out their precious time to join us. Thank you, everyone, for this opportunity. Thank you. Thank you so much, ma'am, for enlightening address and for beautifully highlighted the benefit and scope of the systematic review and meta-analysis for the AYUSH researchers.
Thank you again. We are deeply privileged to have among us Honorable Professor Vaid P.K. Prajapati sir, Director of the All India Institute of Ayurveda, New Delhi, as the guest of honor for today's inaugural ceremony of this one-month certificate program. Sir's journeys in Ayurveda spans more than 3 decades of outstanding service in teaching, research, and administration. He has served in several prestigious leadership roles, including as VC at Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur, Director at Institute for Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda, Gujarat, Dean and Professor and Head at Department of Rasasastra and Bhashaj Kalpana, AIIA New Delhi, and Director in Charge of Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homeopathy, Ghaziabad, and several other senior administrative positions where his dynamic leadership has set new benchmark for excellence. Sir's pioneering work in the standardization of Rasasastra preparation, pharmacopoeia standards, and self-life studies has strengthened the scientific foundation of Ayurvedic formulations. He has also completed several major research projects under AYUSH and institutional funding, including work on Naga Bhasma and systematic review on bronchial asthma. His contribution have been recognized with numerous prestigious awards and honors. Sir's contribution is not limited to India alone. As a visiting professor at AIIMS Rishikesh and IIT Hospital, New Delhi, and as an invited speaker at international conferences in Mauritius, Italy, Sri Lanka, Poland, and Nepal, and many more, Professor Prajapati sir has carried the torch of Ayurveda to the global stage, showcasing India's tradition, medical wisdom through the lens of modern scientific validation. Under his stewardship, the All India Institute of Ayurveda has emerged as a symbol of integrative excellence, a place where ancient Ayurvedic wisdom harmonizes with modern research methodologies, evidence-based validation, and collaboration. Such lifelong dedication to research and innovation truly resonates with the vision of initiative. So we are therefore profoundly honored to invite Honorable Professor P.K. Prajapati sir to kindly address the gathering and share your invaluable words of wisdom with all of us. We eagerly look forward to your enlightening thoughts. Welcome, sir. Good evening to all of you. The respected chief guest of today's inaugural session, Professor Kartar Singh Dhiman sir. Distinguished guest, Director General CCRAS Haryana sir. And chairperson of today's inaugural session is Dr. Professor G.S. Tomar sir. Dr. Seema Dwivedi ji. Esteemed faculty members, researchers, postgraduates, and PhD scholars, clinicians, and participants. Namaste and very warm good evening to each one of you. I begin by sincerely appreciating the insightful words shared by the previous speakers, while they have warmly welcomed us, introduced the very vision of the Maharshi Charak Ayurveda Research and Development Scheme, provided a clear overview of this certificate program, and beautifully highlighted the benefits of the scope of AYUSH researchers. I wish to take this opportunity to delve deeper into the scientific imperative and makes this training not just timely, but truly transformative for the future of Ayurvedic sciences. Ayurveda has always been a complete system of evidence-based medicine. Our eminent ancient texts of Charita, Susu Samhita, and Ashtanga Hridaya are observations, reproducible methodologies, and logical framework for the clinical validation. Yes, in the contemporary scientific landscape, the greatest challenge we face is not the lack of individual studies, but the fragmentation and lack of high-grade synthesized evidence. Thousands of Ayurvedic clinical trials exist on rasayana therapies, panchakarma procedures, prakriti-based interventions, herbal formulations like ashwagandha, gudchi, or trikatu, but they remain scattered, heterogeneous in design, often published in regional languages or non-index journals, and rarely synthesized with the methodological rigor
demanded by the global standards. This is the precisely where systematic review and meta-analysis become the bridge between our rich classical knowledge and modern scientific acceptance. These methodologies allows us to move beyond the narrative reviews and individual opinions to generate the level 1 evidence, pooled effect size, forest plots, heterogeneity, assessment, and great trade certainty of evidence that can directly inform clinical guidance, policy decision, pharmacovigilance, and interactive healthcare protocols. Thus, this 1 month intensive program, we are not merely teaching tools, we are empowering our AYUSH community with the scientific armamentarium to answer the critical questions such as those does Panchakarma detoxification truly modulate inflammatory markers in metabolic syndrome, and by what standardization and main differences? What is the level and significance of the evidence for Ayurveda studies in different clinical conditions like avascular necrosis, inflammatory bowel diseases, chronic ulcers, respiratory ailments till date? What are the research's gaps and are the basis what can be way forward, how to strong in the evidence? All the participants will learn the frame of AYUSH specific PICO and PICO questions that respect classical concepts like Fidosa, Agni, and Prakriti while aligning them with the contemporary research standards. Evil Matter Prisma 2020 flow diagrams, risk of bias tools, data extraction, strategies, Revman Web for the forest plots, R programming, R for evidence, advanced meta regenerations, grade pro for the certainty assessment, and Ryan for the effective screening, all related to the unique challenges of translational medicine research. At All India Institute of Ayurveda, we have already taken concerned steps in this direction with 25 specialty departments, state-of-art interdisciplinary research laboratories, more than 740 active research projects, and 90 MOUs with the prestigious national and international institutes. AIIA is committed to leading the evidence synthesis revolution. As the convener of this program, I see it as the strategic investment in building a new generation of AYUSH researchers who can produce publication, ready systematic review, and meta-analysis that meet the highest global benchmarks. I therefore urge every faculty members, PG scholars, PhD candidate, PhD scholars, clinicians, and researchers present here to approach the coming weeks with full dedication. Engage actively in the hands-on sessions, clarify your doubts daily, and treat every assignment as an opportunity to strengthen the scientific foundation of our system. Let this program mark the beginning of the new era where AYUSH researchers is no longer described as the promising traditional knowledge, but as the high certainty evidence-based medicines. With these scientific aspirations and best wishes for an intellectually enriching and
professionally rewarding journey ahead. I once again thank the entire organizing team, Institute of Applied Statistics, CCRAS, and Maharshi Charak R&D scheme for this visionary collaboration. I think it will provide a good platform for all of us to understand the matter in such a way that is needed for the world nowadays. So I am very thankful to all of you. सर रवि नारायण सर शायद नहीं जुड़ पाएंगे, वो कहीं मीटिंग में है और इसलिए हम आगे बढ़ेंगे चलें. Thank you all of you. Namaste to all once again, and hopes that you will take this opportunity as a 2020 cricket match that could give us extreme opportunities for future. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your profoundly inspiring words and for gracing the inaugural ceremony of the certificate program. Your vision and dedication and lifelong commitment to advancing Ayurvedic science continue to inspire researchers and scholars across the country. Thank you for your overall mentorship guidance to initiate this program, to finalize the lectures and hands-on session. Thank you so much, sir, for your overall guidance and support to initiate this program. We deeply grateful for your presence and blessings today. As sir said that our DG sir from CCRAS, I think someone joined as name Acharya RN. Sir, is there or not? Let me check. Probably he will join late. Okay, So go okay. ahead, because we are in meeting and he told me that it is difficult to join today. Yes. So Okay, if please phone him. If he are able to join, then it's okay. Otherwise, go ahead. Okay, sir. Okay. So meanwhile, our staff is communicating with sir, so we are proceeding further. It's a matter of immense pride and privilege to introduce our chief guest for today's inaugural ceremony, Honorable Vice Chancellor of Shri Krishna University, Professor Vaid K.S. Dhiman sir. Sir is a distinguished academician, eminent Ayurveda physician, and visionary administrator with a remarkable career spanning over 3 decades in the field of Ayurvedic education, research, and healthcare. He completed his BMS in 1988 from RG Postgraduate Ayurveda College, Himachal Pradesh, followed by MD in Salakatan from Gujarat Ayurveda University, and later earned his PhD in Ayurveda Salak from Sampurnanand Sanskrit University in 2007. An apex expert in Ayurveda ophthalmology, he has guided and co-guided 40 MS and more than 9 scholars in PhD and many more during his academic career. His research contribution, including externally funded projects on dry eye and migraine, reflecting his strong clinical and research orientation. He has served in prestigious institutions such as Institute of Teaching and Research in Ayurveda at Jamnagar and RG Postgraduate Ayurveda College, Paprola, and has been associated with Faculty of Ayurveda IMS BHU since May 2022. His administrative excellence is best exemplified by his tenure as Director General of Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, CCRAS, from 2015 to 2021, where he led several transformative initiatives. He also held the additional charge of Director General of CCRUM during 2017, demonstrating his leadership across multiple AYUSH domains. Under his leadership, major integrative public health initiatives were undertaken, including the implementation of Ayurveda under NPCD CDCS, integration in RCS program in selected PSCs of Gadchiroli district. कुछ इसमें पता नहीं क्या हो गया ये. He also played a pivotal role in integrating information technology into Ayurveda research through initiatives like Namaste Portal, AYUSH Hospital Information Management System, Ayurveda Web Portal, and APTA Digital Library. His vision for biotechnology led to collaboration with IIT Delhi, resulting in innovations such as automated Sarsutra and Shirodhara system, along with patents and copyrights. He also conceptualized advanced projects like automated Vasti Yantra and the environmentally safe pharmaceutical processing system. His contribution also include the establishment of National Raw Drug Repository and Advanced Research Facility at the Central Ayurveda Research Institute, Jhansi,
and effort towards mainstream Marm Chikitsa through scholarly documentation and publication. He has also played a pivotal role in expanding Ayurveda into veterinary sciences by establishing a collaborative research center for veterinary Ayurveda and contributing to AFI Part 4. With over 114 research publications, authorship of 96 books, and participation in more than 133 national and international academic events, Sir has made exceptional contribution to academic and research disseminations. His leadership has been recognized at the highest level, including the conferment of the Vyoshrestha Samman by CCRAS by the Honorable President of India, along with the prestigious fellowship and national awards. During COVID-19 pandemic, under his leadership, CCRAS conducted 23 clinical trials and played a crucial role in providing preventive and therapeutic support, along with technical guidance to Ayurveda institutions across the country. He also contributed to global health policy towards his role in developing the WHO SCRO regional guidelines on research methodology for traditional medicine. With great respect and admiration, now I humbly invite Professor Kartar Singh Dhiman sir to kindly deliver his inaugural address and enlightening us with his valuable insights and blessings in this inaugural ceremony. Please, sir, welcome, sir. अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बड़ी डिटेल में आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया. इसकी आवश्यकता नहीं है. जब हमारे बड़े भाई जीएस तोमर सामने बैठे हों तो इतने परिचय की आवश्यकता नहीं होती. बड़े लोगों का इंट्रोडक्शन बड़ा देना पड़ता है, जरूरी है. बड़े भाई को पहले तो बड़े भाई को नमस्कार. और मैं समझता हूं कि इस प्रयास के पीछे हमारे जीएस तोमर जी का जो प्रेरणा है वो हम सबको बांधी है एक सूत्र में. मैं सबसे पहले उनको नमस्कार करूंगा. मेरे दूसरे सहयोगी प्रोफेसर पीके प्रजापति जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के निदेशक, पुराने साथी, प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य जी, महानिदेशक केंद्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, सीमा द्विवेदी जो आज हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम का पूर्व भूमिका और क्या क्या कर रहे हैं वो सारा रखा. थैंक यू डॉक्टर शालिनी, आपने बहुत अच्छे से इसको कोऑर्डिनेट किया और हमारे जैसे व्यस्त लोगों को इस प्रोग्राम के साथ बांधा. वास्तव में ये एक जो सिंथेसाइज्ड सर्च एविडेंस का जो आपने एक टूल के बारे में सारे ही जितने लोग इसमें जुड़े हैं उनके लिए जो एक प्रेरणादायक काम किया है, ये पहली बात तो ये कि सराहनीय काम है. और इस सराहना का पहले श्रेय जाता है प्रोफेसर जीएस तोमर जी को. आप जीएस तोमर नहीं, मैं गजेंद्र सिंह तोमर कहूंगा, क्योंकि आप सच में गजेंद्र की भूमिका जो है वो आयुर्वेद के लिए निभाते आए हैं. आप ये हमारे लिए प्रेरणादायक हैं. आप ये बनाए रखिए. जितने बाकी अब आपने स्टेज पूरी तरह से रख दिया है, सजा दिया है, बता दिया है इसका महत्व क्या है. मैं तो अपने अनुभव से सारी बात शुरू करता हूं तोमर जी. 2017-18 तक मुझे इस सिस्टम का सिस्टेमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के बारे में कोई बेसिक जानकारी तक नहीं थी जी. हैदराबाद में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ इसी काम पे. एम आई ऑडिबल? यस सर. क्योंकि यहाँ इंटरनेट जरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. तो चलो दिख रहा है तो चलो अच्छी बात, सुन रहा है तो अच्छी बात. जब मैंने इस सेमिनार को, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, इसको अटेंड किया तो थोड़ी सी जानकारी मिली कि हमारा सिस्टम तो उस समय तक सचमुच में ये स्थिति थी कि हमारे सिस्टम के बड़े कम लोगों को ये जानकारी थी कि सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस से भी हम एविडेंस जनरेट कर सकते हैं. और आते ही उस समय मैं काउंसिल में था, आते ही हमने अपने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये व्यवस्था की और कुछ को तो हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा और कुछ को ऑनलाइन करवाई. और 2019 में ये प्रोग्राम हमने बहुत सारे विषयों पर कार्यक्रम लिए और रिसर्च ऑफिसर्स ने इस पे काम किया. नो डाउट इट वाज ए लर्निंग फेज. कठिनाइयां आई बट वी ओवरपावर्ड ऑल दोज ऑब्स्टेकल्स एंड अब मुझे खुशी है कि बहुत सारी उसकी पब्लिकेशन जो है वो काउंसिल के द्वारा हो चुकी है. बट
वी कैन नॉट से कि वी हैव बिकम परफेक्ट, बट इसको अब डिसेमिनेट करना और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए इसको एक आर्मामेंटेरियम के रूप में, एक आर्म के रूप में प्रोवाइड करना, ये हमारी इस जनरेशन की जिम्मेवारी है। और प्रोफेसर जीएस तोमर, प्रजापति जी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी और डॉक्टर आचार्य जी ने इसको एक संयुक्त रूप से इकट्ठे होके ये प्रयास जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के माध्यम से इसको करने का एक सराहनीय कदम उठाया है, ये काबिले तारीफ है। और इससे हमारी अगली जनरेशन जो है वो कैपेसिटेट होगी। और मैं समझता हूं कि इससे जब लोगों की आंख खुलेगी इससे, तो आगे वाली जनरेशन को ये नया कुछ देके, एविडेंस देके जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जो न्यू इसमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं लर्नर के रूप में, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि ये 1 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा 1 महीने के लिए। आपको फिक्स टाइम है, आप अपनी सारी एक्टिविटीज को पूरा करके उस समय 1 घंटा ये समय अगर आप रेगुलरली देंगे, अपनी क्वेरीज को, अगर उस समय कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी क्वेरीज को आप राइट डाउन करते रहेंगे तो आपको जवाब मिलता रहेगा और आप इसमें सचमुच में सक्षम होंगे और ये काम कर पाएंगे। तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, जो अनुभव से मैं कहता हूं कि केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेने से किसी की कैपेसिटी नहीं होती है। अब आगे एक विषय जो रवि नारायण आचार्य जी की बेसिकली ज्यादा भूमिका उसमें रह सकती है, और काउंसिल से कोई अधिकारी जुड़ा है तो मेरा मैसेज उनके तक पहुंचाएं कि जो विषयों पर हमें मेटा एनालिसिस करने की जरूरत है, सिस्टमेटिक रिव्यू करने की जरूरत है, आप क्योंकि डायरेक्टली रिसर्च से जुड़े हैं और उनके ऊपर बहुत सारा काम हमारे रिसर्च पोर्टल्स पे ऑलरेडी पड़ा है, आप वो विषय निकालिए। विषय निकालने के बाद एक काम जरूर करिए कि जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको ये इंडिपेंडेंस रहेगी, आप एटलीस्ट एक काम, एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस एक शिक्षण संस्थान को जरूर दीजिए। और शिक्षण संस्थानों में क्या आपने यंगेस्ट जो वहां पर टीचिंग फैकल्टी ज्वाइन किया है, रेगुलर टीचिंग फैकल्टी जो ज्वाइन किया है, आप उनको ये काम दीजिए। और संस्थाएं उस काम को करने के लिए फाइनेंशियल और बाकी जो असिस्टेंस है वो संस्थाएं उसको उपलब्ध कराएं। अगर आपने हर संस्था से एक आदमी को एक प्रोजेक्ट सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस का करने के लिए इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन अगर ये काम हो जाए CCRAS से, तो मैं समझता हूं और भी संस्थाएं इसको ले सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि एक संस्था में बीज परमानेंट के रूप में उनके पास चला जाएगा, और एक बार बीजारोपण जब हो जाता है तो वट वृक्ष जरूर बनता है। मेरी आज विशेष रूप से एक ही ये सुझाव रहेगा कि इसको आगे रोकना नहीं है, लोग अपने आप भी ढूंढें। आप जब रिसर्च पोर्टल्स पे जाएंगे, एक विषय पर कितने सारे काम हुए पड़े हैं, जब आप उसको पेन डाउन करेंगे देन आपको इतना सिखाया जाएगा कि हाउ टू मेक द इंक्लूजन क्राइटेरिया, कितनी रिसर्चेज को आप अपने क्राइटेरिया में ला सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया है, जिनका प्रोटोकॉल एक है, ऑब्जेक्टिव एक है, तो वो आप मेथोडोलॉजी सीखेंगे। आप उस प्रकार से आगे बढ़ के अपने आप भी प्रोजेक्ट जो है अपने संस्थानों में या फंडिंग एजेंसीज को आप भी प्रोजेक्ट अपने आप डाल सकते हैं, ये लर्न करने के बाद। तो इन 2 वे अप्रोच से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, और इसको आगे बढ़ाइए। हम जब आज से 10 साल 15 साल पहले जब बिल्कुल नो हाउ नहीं थी इस विधा के बारे में, इस हमारे योजना के बारे में, हम इससे भी काम कर सकते हैं। आज ये स्थिति आई है कि हमारे ऊपर, हमारे सामने लोग घर में लेकर हमारे ये प्रोग्राम आए हैं, इसका पूर्ण लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी बात तभी हो पाएगी जब आप मन से ये बात मान के चलेंगे कि ये सिस्टम हमारा है, ये सिस्टम हमारा है, हम इसके स्टेक होल्डर हैं, हमें अगली जनरेशन के लिए जवाबदेह हैं और अगली जनरेशन के लिए कुछ नया छोड़ के हमने जाना है। और देखिए,
कुछ ही समय लगेगा। अगले 10 सालों में अगर ये इस प्रकार से समन्वित प्रयास चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों में ये एक कॉमन बात हो जाएगी कि आयुर्वेद के जितने पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, इवन अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, दे आर वेल अवेयर कि हम और कोई काम नहीं तो अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ये सिस्टमेटिक रिव्यू वाला काम भी हम कर सकते हैं। एक हायर लेवल का एविडेंस जनरेट करके दुनिया के सामने अपने सिस्टम की अच्छाइयां ला सकते हैं। ये इसमें आपकी कैपेसिटी अगले 10 सालों में ये टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ एवरी आयुर्वेद कॉलेज हो जाएगी कि सिस्टमेटिक रिव्यू भी एक कोई एक कैपेसिटी है जो हमारे पास अब आयुर्वेद वालों के पास है। हम भी ये काम कर सकते हैं। मेरे को इस योग्य समझा कि मैं आपके इस कार्यक्रम के इनॉग्रल सेशन में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हो सका और अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर सका। मैं तोमर जी को एक बात और कहना चाहूंगा कि अगला प्रोग्राम जो कोई आप रवि नारायण आचार्य जी से विषय ले लीजिए कि इस विषय पर भी हमें आयुर्वेद फैटर्निटी को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूं कि मेरी यूनिवर्सिटी से हम उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेंगे और उसमें हम भी अपना योगदान जो है वो इस तरह से देंगे। अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफल एक महीने के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के लिए, प्रोग्राम के लिए। और जो शालिनी जो इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको भी मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट आज इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुए हैं और आगे एक महीने में ये ज्ञान लेने वाले हैं, उनको मेरा पहले तो आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और आप इसको अब जब ज्वाइन कर लिया है आपने तो एक महीना अपना समय अवश्य दीजिए और सक्षम होइए। हमारी सक्षम होने से ही हमारे सिस्टम का नाम जो है वो आगे बढ़ेगा। और जब हम सक्षम होंगे अपने सिस्टम को एक ऑथेंटिक एविडेंस के रूप में दुनिया के सामने लाएंगे तो हम भी अपना योगदान भारत को विश्व गुरु बनाने में इस प्रकार से दे पाएंगे। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और प्रशिक्षार्थियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for your profoundly inspiring words and for blessing and encouraging the all participants. As the sir said that from tomorrow onwards, we learn each topic day by day. And if you miss the live session, I recommend to try to join the live session so you can discuss your queries as much as possible. And after the session, if you found that any query remains, you can mail us, you can directly message us, and that query will be discussed separately. So thank you so much, sir, again for your presence and your word of wisdom and your encouragement and your blessings for this program. Now it is with great pleasure and honor that we introduce the distinguished guest for this inaugural ceremony, Honorable Professor Vaidyaran Acharya, sir, currently serving as Director General of CCRAS, New Delhi, with over 27 years of dedicated service in the field of Ayurvedic science. Acharya sir has made significant contribution to the both teaching and research. Acharya sir's distinguished Amit, thank you for the invitation. I am on travel, so I will be very short. At the outset, my best regards to Professor Tomarji and my senior and mentor, Professor K.S. Dhiman ji, and my colleague, Professor K. Prajapati ji, and who is also director when I was a professor at Jamnagar, and Sima Divedi ji, Shubham ji, सबको or all the participants, my regards to all of you. And I'd like to I thank Professor Dr. Shubham for these invitations and initiatives. I am associated with this organization, Charak Sansthan, and also statistics since last 3 years. And dear friends, as told by Professor Dhiman, and it is we are quite late
but we should not let in these terms of creating scientific evidence in terms of systematic review, meta-analysis, which is being considered as one of the most strongest evidence in clinical research in particular. And as told by Professor Dhiman during his tenure, a lot of he has initiated and he has sown the seed of these things, and CCRS is quite active in that aspect. But it is true that this systematic analysis and meta-analysis is being limited to only to the CCRS or some of the national institute like AIIA or NIA, but very rarely, very few teachers are coming forward for these activities. And you can see, we all can see the publications. Very few publications are in that aspect, though we have huge number of research publications available as on today as different labels. It may be MD thesis or PhD thesis or some publications are there. But we are very lag behind about this initiatives, and I thank. But it is though we are late, but we should not. It is high time that we must teach the fraternity, the students, and other stakeholders who are quite interested urgent today, and association of statistics people, experts from the statistics people, that is collaborations. Previously, we always think that Ayurveda, the Ayurveda people will do the research, and will very few biostatisticians come forward to teach the Ayurveda fraternity about this, how to do design a things, how to design a clinical trial, the systematic review, everything starts from there. And this Charak Sansthan has Institute of Applied Biostatistics has since last 3 years. That aspect they have touched to some extent, and now the students and everything, they were aware about this, how to design a statistical, they have to design a clinical trial and select the statistics exact sample in the clinical trials. Now the next phase is the meta-analysis and all these things. Meta-analysis and systematic review, the outcome is to design a new project, clinical project, to find out the gaps and particularly in the public health research or other things where we are quite lacking. And I'm sure, and I am very satisfied that seeing near about 400 people as on today, as on now, are observing this inaugural session. This shows that how interested and how deeply this Institute of Applied Biostatistics has gone to the students, and many stakeholders are interested to know this newly topic for them. Though it is quite vibrant in the our statistics or bio medicines, but we in Ayurveda field, we are quite new to this. And the CCRS, as told by Professor Dhiman, CCRS is taking steps in that aspect, but the limitation, we have everything limitations. The scientists of CCRS are limited, and they have other things to do, many things, and doing all the things is not possible. So collaborations with educational institutions is quite necessary. That's why CCRS is now coming forward to have collaboration with educational institutions and also institutions like Applied Biostatistics, so that this thing, scientific vigor can be shared with the various institutions. I again thank Professor Tomar and Professor Seema, Divedi ji, and Dr. Shubham and others for giving me an opportunity to share my views in this inaugural sessions. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you so much. It's been absolute honor and privilege to have you with us today and as our distinguished guest, and your inspiring presence, profound insights, and vast experience have truly elevated the essence of the ceremony. We are deeply grateful for your valuable time, wisdom, and encouragement you have generously shared with all of us. So now, moving forward, we are deeply honored to welcome our esteemed guest of honor, Honorable Dr. G.S. Thomas, sir, Director of AYUSH Research at the Institute of Applied Statistics and Chairperson of the Maharshi Charak Ayurveda Research and Development Scheme, as well as the President of Vishwa Ayurveda Mission. He also served with distinction as CRA Guru at Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Ministry of AYUSH, Government of India, and as the National Vice President of Arogya Bharati. Dr. Thomas's illustrious professional journey spans several decades of exemplary service in Ayurveda, including his tenure
as the former principal of Government Ayurvedic College, Handia, Prayagraj, and his recognition as fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. His vast expertise is reflected in his contributions to prominent national bodies such as Technical Working Group for AYUSH and TEP collaboration under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and the Executive Council of Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur. With over more than 45 years of this clinical experience, Dr. Thomas sir has been guiding force in advancing Ayurvedic science and practice. His remarkable contributions have been recognized through numerous prestigious honors, including Prasithya Shri Award, Prayag Gaurav Samman, Kavya Pratishtha Samman, Dhanvantri Award, Lifetime Achievement Award. Notably, he has been conferred with the 20th Century Scholar Award from the New York, USA, in recognition of his outstanding global contributions and many more awards and recognitions. We are indeed privileged to have Dr. Thomas sir with us today again, not only as guest of honor, but also as the convener of this impactful program. It is now my profound privilege to invite Honorable Dr. D.S. Thomas sir to deliver his presidential address and share his invaluable insights with all of us. Please, sir. Welcome, sir. मेरी आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम. सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से अमित जी इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए. मैं एक सामान्य रूप से एक जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहता हूँ. आज भी विद्यार्थी की तरह काम कर रहा हूँ. आज के इस एकेडमिक इवेंट के चीफ गेस्ट हमारे बड़े ही सक्रिय, डेडिकेटेड, एक शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी माननीय कुलपति श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र प्रोफेसर धीमान साहब और हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जिनको मैं शोध पुरुष कहता हूं, आचार्य जी, dedicated in the services of the suffering humanity, not only in the field of the clinical research. He is the person who is fully dedicated for the cause of the research and definitely will be proved as an asset for this institution. और हमारे एक ऐसे यशस्वी और सादगी और सरलता के व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर पी.के. प्रजापति, एक हमारे निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिन्होंने कि हर कार्य में रुचि लेते हुए हमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, MOU हमारे साथ किया. मैं बहुत बहुत उनकी प्रेजेंस को रह करके मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमने इस मिशन को जो शुरू किया, उस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, उसमें पूरा का पूरा सहयोग हर समय आपका रहा. और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर शालिनी राय, एक बहुत ही यंग रिसर्चर, एक अच्छी डेडिकेटेड टीचर के रूप में हमारे साथ हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं. और डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी ने हमारी मिशन का जो हमारी स्कीम है, महर्षि चरक आयुर्वेद रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम, उसके बारे में परिचय दिया. और साथ साथ में हमारे शुभम जी ने ये मिशन लिया कि जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस में हम रिसर्च का ये टेम्पर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक कॉलेजेस के हमारे आयुर्वेदिक फैकल्टी फैटर्निटी के हम इस तरह से नई नई चीज़ों से लोगों को एजुकेट करने के लिए आगे आए. तो इसके लिए ये महर्षि चरक रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम बनाया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स निरंतर इस दिशा में काम कर रही है. और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. जैसा कि अभी हमारे आचार्य जी ने कहा, प्रजापति जी ने कहा, धीमान साहब ने यही विशेष रूप से कहा कि जो लक्ष्य हमने पूरा रखा है, जो हमारा मिशन है, उसमें हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है. चरे वेति इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना है. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि आयुर्वेद के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं कि आयुर्वेद इज टाइम टेस्टेड साइंस. All the principles laid down by our Maharshis are fully tested on the various on their own parameters. सिद्धांतो नाम यशस्या परीक्षकैर बहुविध परीक्ष हेतु विश्व साध्यता स्थापित निर्णय. In spite of that, now the Ayurveda is not limited between the four walls of the country. Now it has become global property. If you want to convince the global community, you will have to convince them in their own language. Keeping this a very objective in the mind, we have decided to bridge between the Ayurveda and evidence-based medicine. हमारा ये लॉजिक था. इसी के आधार पर अभी मैंने एक सेमिनार भी किया, ब्रिजिंग आयुर्वेद विद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. माय डियर फ्रेंड्स, एविडेंस जनरेट करने के लिए
एविडेंस को पब्लिक के सामने लाने के लिए आज हमारा आयुष मंत्रालय ने जो कार्य किया है वो इतना सराहनीय है कि मोर देन 80,000 पेपर्स आर इन पब्लिक डोमेन आज आपको मिलेगा। और हमारे स्कोपस और तमाम हमारे जितने रेपुटेड हमारे पीयर रिव्यू जर्नल्स हैं इनमें हमारे जो है पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। आज ये सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड मेटा एनालिसिस के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में ये एक साइंटिफिक डेटा को वैलिडेट करने के लिए क्लिनिकल रिसर्च के लिए सबसे उत्तम और उत्कृष्ट उपाय है। आप जो है सिस्टमिक एनालिसिस मेटा एनालिसिस के बिना हो सकती है, लेकिन मेटा एनालिसिस सिस्टमिक के बिना, सिस्टमिक एनालिसिस के अंदर में हम दोनों चीज आ सकती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और यहाँ पर हमको जब क्वांटिटेटिव करना होता है तो हम डाटा को वैलिडेट करने के लिए लेटेस्ट मॉडल ऑफ द रिसर्च है और इसको क्लिनिकल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो हमारी पायोनियर संस्था है, यहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं और टीचर्स जिनके माध्यम से पूरे देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी शोध को प्रकाशित किया जाता है, जिसको सभी ग्लोबल रूप में एक्सेप्ट करें। इसके लिए ये आवश्यक है कि हमको लेटेस्ट पैरामीटर्स पर काम करना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की जो टीम है, हमारी इंडिया के चुनिंदा बायो स्टैटिस्टिशियन इसमें लगे हुए हैं, जो कि आपको मंथ लॉन्ग सर्टिफिकेट कोर्स में अपने लेक्चर्स देंगे, जिससे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन होगा। यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई पार्टिसिपेंट अपना मिस कर देता है कोई क्लास, तो अपने क्वेश्चंस को, क्वेरी को डाल करके दे सकता है, जिसको लेटर ऑन हम लोग सबमिट कर सकते हैं। और हमारी ये भी योजना है कि जितने भी हमारे कोर्सेज हो रहे हैं उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न मटेरियल को we will publish in the form of a book, or we can provide it as a soft copy and hard copy to the participants. तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर धीमान साहब को। मेरा स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ठीक न होने के कारण मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा, और मैं एक और खुशखबरी आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि अभी प्रोफेसर धीमान साहब ने जो हमारे साथ एमओयू किया, वही एमओयू हम गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में भी करने जा रहे हैं। 7 अप्रैल को हमारा एमओयू होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा धीमान जी को और विशेष रूप से प्रजापति जी को कि उन्होंने, जो डायरेक्टर हमारी डॉक्टर सुजाता कदम जी हैं, उनके साथ हम लोग जो है एमओयू इसको करने जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम लाभान्वित कर सकें। और अभी दूसरी बात एक डॉक्टर धीमान जी ने बताया, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट हमारा जो कार्यक्रम होगा, नेक्स्ट जो सेंटर होगा वो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय होगा, उसमें हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं अधिक समय नहीं लूंगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सारी टीम को कि उन्होंने सही तरीके से इस कार्यक्रम को अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया। और इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रिसर्च डायनेमिक्स in the field of the Ayush. It is supposed to be one of the best contribution of this institute to develop the temper of the research and update the research module in the form of the present perspective. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वंस अगेन टीम को, अमित तिवारी जी को, शुभम जी को, सीमा जी को, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी आपका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे डॉक्टर अवनीश पांडे को कि हम लोगों ने इस मिशन को जो आगे बढ़ाया है, वो मिशन अंततः हम लोग अंततः लगातार लोगों को एजुकेट करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहेंगे। और चरैवेद सिद्धांत से पूरा सिद्धांत तब है जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम एंड पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पहले हम बोलते हैं एक मिनट, सर की तबीयत ठीक नहीं है, सर को हम ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। सर प्लीज टेक गर्म हल्दी नमक का पानी। सर बस मैं अभी वही करने जा रहा हूँ। जी, हम सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि देखिए सर इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमारे 400 बच्चे करीब जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। वैसे अभी हम देख रहे हैं कि 358 पे आ गई है संख्या। वेरी गुड। घर जाने का टाइम है तो लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं। वेरी गुड। तो टाइमिंग का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे सर।
तो हम हाँ, चाहते हैं right. ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ के ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें। Exactly. और आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे हम सब लोगों को, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और हम स्पेशली धन्यवाद देना चाहते हैं अपने वैद्य धीमान सर का, कि उन्होंने अपने व्यस्तम अपने विजिट शेड्यूल में से टाइम दिया हमारे यहाँ प्रोग्राम में इसमें आए। Right. और प्राचार्य जी का भी, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत मीटिंग में लगे हुए थे और किसी तरह से वो टाइम निकाल के यहाँ पे पहुंचे हैं। Exactly. हम भी ऑन दी वे ही थे, हम भी गाड़ी में से ही बोल रहे थे बैठे बैठे, इसलिए हमने वीडियो ऑन नहीं किया था। बिल्कुल। तो लेकिन ठीक है, सब होता रहता है, गवर्नमेंट में ये सब होता है और यही हमें सीखना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को अपडेट करके ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे पहुंचना जरूरी है। और Right. इस मोड में अगर ऑल इंडिया पीछे रहा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें ऑल इंडिया वाले से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, ढंग से समझिए आप। Right. सिस्टेमेटिक एनालिसिस और मेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Right. ऑलरेडी Right. हम लोग इस पे बहुत काम कर चुके हैं, 2-3 ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं वर्क, इसलिए बहुत जरूरी है इसको Right. समझ के हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा कि आप सारे लेक्चर्स को पढ़ें और रिकॉर्डेड सेशन की भी फैसिलिटी है। अगर कोई सेशन मिस होता है आप रिकॉर्डेड एक्सेस करें। क्वेरी अगर कोई लाइव सेशन के दौरान आपकी मिस होती है तो आप हमें एनी टाइम आप क्वेरी आप ड्रॉप आउट करिए, आपको इसका रिवर्ट मिलेगा। और अगर नेसेसरी होगा तो हम लोग किसी न किसी एक्सपर्ट को आपसे कनेक्ट कराएंगे। अगर आपकी क्वेरी डिस्कस करने लायक है तो कोई ना कोई एक्सपर्ट आपको इस क्वेरी का ऑन कॉल रिस्पॉन्स देगा। सेशन के बाद भी आप क्वेरी कर सकते हैं। बहुत एंड आपको पीडीएफ नोट्स, जैसे सर ने बताया, पीडीएफ नोट्स और सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप एनी टाइम यू कैन पोस्ट योर क्वेरी विद अस। सो थैंक यू सर फॉर योर प्रोफाइंड एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स। एंड ये आपकी एनर्जी है जिस वजह से हम लोग ये निरंतर कार्य कर पा रहे हैं। आपके मोटिवेशन में लगातार हम लोग काम कर पा रहे हैं। So now moving forward to formally conclude this inaugural session with gratitude and acknowledgement, it is my privilege to invite the joint organizing secretary of this program, Dr. Avnish Pandey sir, who is presently serving as medical officer Ayurveda at Government of Uttar Pradesh. And sir is dedicated Ayurveda physician and active contributor to public health care delivery, known for his commitment to promoting evidence-based Ayurvedic practices at very grassroots level. So with great respect, I now invite Dr. Avnish Pandey sir to kindly deliver vote of thanks. Please sir. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 month online certificate program on systematic review and meta analysis for आयुष रिसर्चर्स, इस विषय पे जो हमारा 1 महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है आज से, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी सहभागियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे यह कार्यक्रम हो रहा है और हर एक लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बहुत सावधानी पूर्वक हमको देखना होगा। और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन हम सभी को मिला, ऐसे प्रोफेसर वैद्य के धीमान सर को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सर आपने अपना आशीर्वचन हम सभी को दिया, बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ डिस्टिंग्विश गेस्ट के रूप में प्रोफेसर RN आचार्य सर, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक CCRAS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रोफेसर PK प्रजापति सर, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, सर आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही प्रोफेसर GS तोमर सर, डायरेक्टर आयुष रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टडीज कानपुर, सर आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं महर्षि चरक आयुर्वेदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम, मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शुभम पांडे जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आप महर्षि चरक आयुर्वेदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शालिनी राय मैम जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस कार्यक्रम की, मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, शायद इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाए हैं और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मेरे रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शांति मंत्र के साथ हम समापन करेंगे। शांति मंत्र। जी जी। So before that there is one important announcement that the first session will commence on 2nd April tomorrow at 6 p.m. And I request to all delegates try to join 5 minutes earlier, that because we start at sharp 6 p.m. and the session is on introduction to review in Ayush research that will be delivered by our honorable Professor Dr. Anup Thakkar sir. So please make sure to join on time and we look forward to seeing you then.
As we arrive at the graceful conclusion of this inaugural ceremony, I invite each one of you to pursue for a moment and reflect on the collective pursuit that has brought us together: knowledge, collaboration, and pursuit of holistic well-being. In the true spirit of our rich Indian wisdom and scientific inquiry, let us now transition from words to a vibration of peace and harmony. We shall conclude by listening and reciting the sacred Shanti Mantra, a timeless prayer that embodies our shared aspiration. अवनीश जी सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शुभम जी, हाँ भाई अमित जी। जी सर, जी सर, आप कॉल करिए हमको। ठीक, जी। Namaskar. So, thank you all with this profound message, and we are not only close today's session but also set an intention for the journey ahead. Thank you once again to all dignitaries, organizers, faculty members, our resource persons, committee members, and all participants present in this program. So, on the behalf of our organizing team, we extend our sincere gratitude for your esteemed presence, active participation, and continued commitment towards advancing the vision of AYUSH and integrative healthcare. Thank you all. Thank you once again. We again start tomorrow at 6 p.m. with the first session. So please, we request again, please join 5 minutes earlier to avoid any technical issues at that time. Pranam, sir. Pranam, sir. Pranam, sir. Namaste, ma'am. जी सर। ओके, अच्छा भाई, सर ने बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराइए। ओके, थैंक यू सर जी, प्रणाम सर, आपका आशीर्वाद है। ओके सर, ठीक है।